We're having the motion technology. Allah says, We're having the verily in the creation of We're having the the sound heavens and the earth उनको and the attract alternation of करना, day and night. Thank you very much, sir. Well, the Holy Quran, in various chapters, in various verses, encourages us, instigates us to be very much inquisitive. In Surah Al-Imran, that is chapter 3 of the Holy Quran, verse 19, Allah says, Bismillahir Rahmanir Rahim. Inna fi khalqi samawati wal ard wa ikhtilafi layli wan nahar la ayatin technology and other technology very small. And what next? You can't imagine. There are the things which are coming in the near future. They are beyond our imagination. But the people are as they go. वो कहाँ पर है? And we are simply using these tools. We don't think of number of students who might have some sort of. Thank you very much, Bodhi sir, for such impactful introduction, welcome, and words of wisdom. We're grateful and rewarded you, sir. Thank you so much. Now, before inviting today's guest, let me give a brief introduction about Dr. Bashir. Dr. Bashir has not so much, we can say, the change so far as the lifestyle is concerned. But when we talk this, the modern era, 150 years, we can go back even up to 200 years, the technological development has taken place very rapidly. And when we see today's acceleration of this technological race, that's exponential, if I'm not wrong. Some are saying that we are moving at such a speed in the technology that if we will say in 2000 years, the development in the technology which is going to take place, that will be happening within 100 years of the time right now. So just think, go back to 2000 years, how much this will Davis has done his PhD from affiliation with the University of Jammu, and his research has been on soil catalysis. This is a very recent branch of research wherein he has worked tremendously and he has contributed immensely. Dr. Bashir has been a fellow of CSIR, junior research fellow for 2 years, then senior research fellow for 3 years. Dr. Bashir has published more than 12 books, and I hope more are in pipeline. He is an ardent researcher, and quite in the beginning, this is just the beginning of his career, and he has published more than 53 international research papers with a huge impact factor in H index. I'm sure that you being a young budding scholar, you don't know about the impact factor in H index. This is basically a tool to check the worth of the research. Okay, so when we measure that, the amount of impact that he has basically laid, that's a huge impact he has created in the chemical science, particularly in catalysis and in organic chemistry. Dr. Bashir as well. So there's a lot more to be told about Dr. Bashir, but I'll cut it short. Now, without taking much of the time and standing between you and the resource person, I, with great honor, invite Dr. Bashir Ahmad on desk and share his presentation today. So, involve and flow. डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हुआ था, उसके बाद में इसको कमेमोरेट करने के लिए
जो अटल बिहारी वाजपेयी साहब है उन्होंने एक डे सेलेक्ट किया, दैट इज 9 मई, जिसे हम कहते हैं टेक्नोलॉजी की। लेकिन इसका मनाने का मतलब ये नहीं है कि उस दिन को सिर्फ याद किया जाए, न्यूक्लियर टेस्ट को याद किया जाए, बल्कि जो साइंटिस्ट है या जो इंजीनियर, उनको एनकरेज करना, उनको अट्रैक्ट करना साइंस और टेक्नोलॉजी की तरफ, और उनको अप्रिशिएट करना। उसके अलावा लोगों को अवेयर करना कि साइंस और टेक्नोलॉजी का क्या मतलब है, इससे हमें क्या फायदे हो सकते हैं, हमें क्यों साइंस और टेक्नोलॉजी की तरफ जाना चाहिए। इन चीज़ों को मद्देनजर रख के ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। और इंडिया का एक गोल है, दैट इज विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत। विकसित भारत का मतलब लगता है डेवलप्ड इंडिया, और आत्मनिर्भर का मतलब होता है सेल्फ डिपेंडेंट या सेल्फ रिलायंस कहते हैं वो भारत। और ये सब पॉसिबल है अगर हम इकोनॉमिकली साउंड होंगे, हमारी कंट्री इकोनॉमिकली साउंड होगी। उनसे दोनों पर क्या रिसर्च करा, जवाब नहीं दे सका। वजह ये थी कि इंडिया ने सूची में जो टेक्नोलॉजी का थी वो बाहर जा। अब ये चीज़ें हासिल करने के लिए विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए इंडिया के पास में एक ऑप्शन है क्या टेक्नोलॉजी। जैसे सर ने भी बताया या फारूक सर ने बताया, ये है एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज। आप इसको अप्लाई करेंगे साइंटिफिक नॉलेज को डे टू डे लाइफ में, तो उसे हम कहते हैं टेक्नोलॉजी। लेकिन हम क्या कर सकते हैं इसमें, हमें कौन सी टेक्नोलॉजी आती है, या एक इंडिविजुअल टेक्नोलॉजी के लिए क्या कर सकता है। ये फिजिक्स में जो कंट्रीब्यूशन है, सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे। जगदीश चंद्र बोस, JC बोस जिसे हम कहते हैं, उसने रेडियो एंड माइक्रोवेव ऑप्टिक्स में अपना सिक्का जमाया। वो पहला बंदा था जिसने सेमीकंडक्टर जंक्शन डिस्कवर किया टू डिटेक्ट दीज रेडियो बीम्स। उसके बाद में इसने एक क्रेस्पोग्राफ बनाया टू मेजर प्लांट ग्रोथ एंड रेस्पॉन्स। ये एक इंडियन साइंटिस्ट था जिसने ऐसा किया, और बहुत पहले किया, जब इंडिया में साइंस का नामो निशान नहीं था। इसके बाद में दूसरा एक साइंटिस्ट, इसका नाम आपने सुना होगा, सर CV रमन। इसके नाम पे यहाँ पे साइंस डे मनाया जाता है, ठीक है। इसने एक स्पेक्ट्रोस्कोपी डिस्कवर की, एक इफेक्ट डिस्कवर किया जिसे हम कहते हैं रमन इफेक्ट। इसमें मुझे एक छोटा सा जोक याद आया, हालांकि मुझे इसकी because behind the scenes we never discuss it. So I would like to extend my heartfelt gratitude to all of you, that is students, faculty members, senior faculty members, and thank you, sir. I would like to express our deepest appreciation to our distinguished speaker who has come from GDC Uri, assistant professor in chemistry, for sharing his knowledge, experience and insights about the technology which India has achieved up to today. Now, what is technology? As I will give you example of a kid or a student who joins the school on first day. He is not able to connect the dots. When we go to the school on first day, we are not able to connect the dots. But our teachers appreciate when we connect two dots to make an alphabet or develop an alphabet. Then word, then we make our own sentence. This process takes years for us to develop a sentence. Same way, developing anything of any nation, it takes. Allah says, verily in the creation of the heavens and the earth, and the alternation of day and night, there are signs for the people of learning, for the people of understanding, for the man of contemplation. In various places in Quran, Allah says,